बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। किसी भी मुल्क की जब बात की जाती है सो वहाँ के कुछ इंटरनल इंटरेस्ट भी होते हैं, कभी एक्सटर्नल इंटरेस्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बट इफ़ेक्टिव बायलेटरल डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क के एक्सटर्नल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और एक की ब्लॉक का किरदार अदा करती है। आज हम कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप पर बात करेंगे। कज़ाकिस्तान की जब बात की जाए सो इट्स अ कंट्री, इट्स अ सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है और इस सब के साथ कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आप में से बहुत से लोगों को शायद आज से पहले ना पता हो कि कज़ाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस बैक इन 1991 फ्रॉम सोवियत यूनियन। इट्स ऑल्सो द 9th लार्जेस्ट कंट्री, एक्चुअली द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, 4 times द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ टेक्सास। और इसका जो 57% बॉर्डर है वो रशिया के साथ लिंक करता है, 13% इसका बॉर्डर चाइना के साथ लिंक करता है। अच्छा, इस सब के साथ साथ जब हम यहाँ के ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं और इस सब के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और जो यंग जनरेशन है वो अपने ओल्डर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। अपनी मदर लैंड के साथ कज़ाक जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी शो करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जब कज़ाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1991 में, तो पाकिस्तान उस वक्त उन चंद ममालिक में से एक था जिसने इसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत को कबूल किया और 1992 में दोनों ममालिक के कॉर्डियल रिलेशनशिप्स का आगाज़ हुआ। अभी पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। टूरिज़म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, ट्रेड दोनों ममालिक के दरमियान इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। बट व्हाट आर द एक्चुअल प्लान्स और इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है? वी आर हैविंग वेरी स्पेशल, ऑनरेबल एंड प्रेस्टिजियस गेस्ट इन आवर शो, द एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान, Mr. Yazhan Kestafin, along with the Honorary Consul General Rao Khalid Saab. So I welcome both of you in my show. Good morning, Lahore. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah. I hope you're well, safe and sound. Yes. So bilateral, when we talk about the bilateral relations, so these are very important between the countries. So when we talk about the cordial relationship between Pakistan and Kazakhstan, how do you see the friendship between the two countries? Where is it standing? And what are your plans to make the ties much more stronger than ever? First of all, thank you for having us. It's a great honor. I must say that last year we celebrated the 30th anniversary of establishment diplomatic relations between our countries. Back in 1992, on February 24th, our first president, His Excellency Nursultan Nazarbayev, paid a very first official visit to your beautiful capital, Islamabad. Yes. And on February 24th, we established our diplomatic relations officially. And as you rightly mentioned, Pakistan was one of the first countries who recognized our independence. Yes. And last year we organized a number of different events dedicated to our economic cooperation, to our cultural ties. For example, for the first time in the Central Asian region, not only in Kazakhstan, we organized an international conference dedicated to the legacy of Allama Iqbal. Oh, that's great, yes, mashallah. This event took place in Almaty, in Kazakhstan. We invited our brothers from Pakistan, from Turkey, Azerbaijan, even some European scholars participated in this event. Apart from that, at the very beginning of last year, we organized the very first visit of business people from Kazakhstan to your beautiful country. We arranged their trips to Islamabad, Lahore, and Karachi. Then in May, we organized a single country exhibition, Made in Pakistan 2022, and again in Almaty. We had more than 130 business people from Pakistan. And in December, just the last month, we had high official delegations from Kazakhstan. Again, for the first time, a delegation from the Parliament of Kazakhstan, headed by the Speaker of the lower chamber, visited Islamabad.
Right afterwards, we had a delegation headed by the Deputy Prime Minister, His Excellency Serik Jumangarin. We held the 11th session of our Intergovernmental Joint Commission. And of course, our leaders, they met twice. In September, His Excellency President of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, met with His Excellency Prime Minister Shehbaz Sharif in Samarkand at the sidelines of Shanghai Cooperation Organization Summit. And then in the middle of October, your Prime Minister paid the very first official visit to our capital Astana, where he participated in the Sika Summit. And what was the year? Last year. Last year. Everything, all the things that I'm talking about took place last year. These all happened yes, in 2022. Exactly, in 2022. You know, at the very beginning of 2022, I promised that this year will be a very special one for our bilateral relations, for our bilateral cooperation, and it seems to me, thanks to our joint efforts, we fulfilled our promise. So, Mr. Yazhan Kestafen, my next question to you is the trade between the two countries is very, very important, and also to boost the economy of both countries. So, how would you bring the investment, and how would you bring the investors from Kazakhstan to Pakistan, and the investors from like Pakistan to Kazakhstan? What are your plans regarding this certain area, particular area? So let me give you first some figures. In 2021, our bilateral trade, we more than doubled our bilateral trade, and we almost reached $200 million in our bilateral trade between Kazakhstan and Pakistan. But it seems to me that we are far below from the real potential that we have. And whenever I meet business people, I always say that we have to cross at least 1 billion. It's a must. 1 billion. 1 billion, yes, for sure. Everything is there. The two main issues that we need to address, first of all, is lack of connectivity. The problem is that we have to work on developing our regional infrastructure. Why I'm saying regional is because if we want to deliver goods between Kazakhstan and Pakistan, we have to cross at least two countries in the region, be it Afghanistan, Turkestan, or Turkmenistan, Uzbekistan, or Kyrgyzstan. So that's why we should be working on developing friendly environment, not only in terms of our bilateral cooperation, but in the whole region, to make our business people's life easier. The second issue that we need to address is a lack of information. Unfortunately, our people, including business communities, still know little about each other. What do you mean by the lack of information? Lack of information. About what? About everything. So I'll give you one example. In 2021, in November, for the first time, we organized Kazakhstan-Pakistan Business Forum. And only 35 people from Pakistan came to Almaty to participate in this event. And as they say, it was kind of eye-opener for them, because before coming to Kazakhstan, they didn't know what to expect. And unfortunately, up till now, in Kazakhstan, and not only in Kazakhstan, there is a kind of misperception about the beauty of your country. Still, many people think that, Pakistan is a kind of country with security problems, and so on and so forth. And they do not know about the real potential, industrial potential that you have here in Pakistan. And I'm glad that you know that these are the problems, but you try to solve all of it, and in the eye of your citizens. This is extremely important. We need to address these issues. And in this term, I believe that it is crucial to develop cooperation between media communities, to establish collaboration between TV channels, newspapers, radio, to have this direct exchange of news, information about your culture, about your potential, business opportunities, tourism, so on and so forth, to have this information firsthand from Pakistan, not from international, media community. This is extremely important. And another issue in this term, I would say direct flights. And that's the main issue right now. Exactly, and I'm happy to see that when our Deputy Prime Minister was here in December in Islamabad, we held, as I said, our 11th session of Intergovernmental Joint Commission, and the Civil Aviation Authority of Pakistan signed an MOU with Civil Aviation Committee of Kazakhstan, and it was agreed to launch flights from Lahore to Almaty. Yes, and from Karachi to Almaty. So this is the very first step, and we expect these flights to be launched. And when is it going to start? We hope, inshallah, in March, April.
In March, April, This year, 2023, yeah, like yeah. after 2 months. Yes. Because we believe that direct flights, it's a kind of backbone for developing cooperation between Business, trade, in everything. business, people to people, students, universities, academic circles. When we have direct flights, many things can be done. Many things. All right, I'll come to you. Let me move ahead to Mr. Rao Khalid. Sir, आपकी तरफ अगर आया जाए, so you are playing the role of a bridge between the two countries. Right. So आपके क्या plans हैं दोनों ममालिक को करीब लाने के, और जिस तरह से यज़हान के स्टाफन साहब भी बात कर रहे थे कि ट्रेड के लिए, और लास्ट ईयर जिस तरह से बिजनेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया, सो उन चीज़ों को मज़ीद बूस्ट करने के लिए, यहाँ से इन्वेस्टर्स कज़ाकिस्तान ले जाने के लिए और वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने के लिए, सो आपके क्या प्लान्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है बिटवीन पाकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। रीज़न इज़ कि वहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट, बड़े मेन एनर्जी की कॉस्ट बहुत कम है। हम सजेस्ट करते हैं कि वो इंडस्ट्री स्पेशली जो एनर्जी कंज्यूमिंग है, वो उनको अपनी यहाँ की इंडस्ट्री को रीलोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान एक 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है कज़ाक कंपनीज़ के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान एक गेटवे बन सकता है टू अफ्रीकन मार्केट ऑल्सो। सो आई हैव बीन टू कज़ाकिस्तान मैनी टाइम्स। आई हैव डिस्कस्ड विद लॉट ऑफ पीपल देयर, द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री पीपल, एंड दे आर वेरी कीन कि हम थ्रू पाकिस्तान हम अफ्रीका की मार्केट को भी कैप्चर करें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसके लिए लाहौर में जैसा कि एक्सीलेंसी ने बताया कि कॉन्सुलेट खोला है, हम उनके गाइडेंस के लिए हर वक्त मौजूद हैं। और इट ऑल डिपेंड्स कि कौन शख्स क्या बिज़नेस करना चाहता है, तो हम उसमें उनको गाइड कर सकते हैं। इवन उसके अलावा बहुत बड़ा पोटेंशियल है कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कज़ाकिस्तान जाएं। जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, आईटी में, और बेशुमार बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें के काम पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हम आपने देखा कि एज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब बहुत कीन है और बहुत मेहनती हैं, हर वक्त चीज़ों को पुश करते हैं, और वी हैव बीन गिवन टारगेट्स, और इंशाल्लाह होपफुली हम वो उन टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश। He is a man with vision, broad vision. Yes, very right. Okay, I'll ask a few more questions to you. That your focus will be more on import or exports from Kazakhstan? No, actually both. Both are very important. For example, I always say that when it comes to cooperation between Kazakhstan and Pakistan, it could be and should be a complementary cooperation. What I'm saying is that Kazakhstan is blessed with energy resources. We have oil, we have gas, we have coal, and you need this. So we are ready to, supply. And what are your plans? Yeah. Because I was reading it somewhere that Kazakhstan produces about approximately 81 million tons oil per year. Yeah. So because we lack the energy resources, so do you have any plan to sell it or sign an MOU between the countries, or to sell the oil to Pakistan on the low prices, as we are about to sign an MOU with Russia? Yeah. So in February 2020, during our 9th session of Intergovernmental Joint Commission, it was agreed to establish 3 joint working groups, including 1 joint working group on energy cooperation. Dr. Musaddiq Malik, who is State Minister for Petroleum, yes. He visited our country twice this year, and he had talks with our Minister of Energy. And it was agreed to explore the opportunities to develop cooperation in energy sector. And now our, relevant authorities are in do you talks. have something in plate right now? No. No. We but are things in are discussion. Yeah, we are again, discussion. As I said, the main issue that we need to address is lack of information. Yes. This is the main issue. Our people, as I said, still even business communities, they know little about each other. This year I brought so many people from Kazakhstan, business people, to Pakistan, and believe me, they were impressed, if not shocked, by the real situation on the ground. They didn't expect to see such, well-developed, different facilities in industrial sectors. So again. And many things from could which be done. sector or field did all of those businessmen belong?
You know, in general, I must say, when it comes to Pakistan, we have to be focused on, I would say, 5-7 sectors. This is pharmaceutical industry, textile industry, surgical instruments, sports goods, IT sector, and of course, construction sector as well. Agriculture also. Yeah, sure. Agriculture. Agriculture is another Yes. very promising area. In fact, in 2021, in November, we signed MOU between the Ministry of National Food Security and Research and the Ministry of Agriculture. And we agreed to develop cooperation in agriculture. Agriculture is another very important area that we should be focused on. Agriculture is the backbone of Pakistan. Of course. So And moreover, for example, Kazakhstan is in top 10 among world exporters of wheat. And we're ready to supply wheat to our Pakistani. Pakistan. Sure. All right. राव खालिद साहब, आपसे यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी. जिस तरह से यजहान किस्ताफन साहब से बात हो रही थी, उनका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो राइट इंफॉर्मेशन है वो वहाँ के इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी तक नहीं पहुँचती. और यहाँ के लोग उस तरह से अभी कजाकिस्तान के बारे में जानते नहीं हैं, इनफैक्ट जानना शुरू हुए हैं. जब हम एक्सचेंज ऑफ कल्चर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ कल्चर. फिर जिस तरह से इन्होंने कहा कि मीडिया कोलैबोरेशन के ज़रिए काम हो सकता है, आपका इस हवाले से क्या प्लान है कि किस तरह से दोनों ममालिक के मीडिया इकट्ठे कोलैबोरेट कर सकते हैं, और इसमें आपका क्या रोल या क्या प्लान हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को इंफॉर्मेशन एटलीस्ट एक दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हो सकती है. तो उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, और उसमें जैसे कि एक्सीलेंसी ने कहा कि जॉइंट ग्रुप्स बना रहे हैं. फिर हम यहाँ पे और इस सेक्टर में जो रिलेटेड लोग हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, और होपफुली एक बहुत बड़ा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ब्रेक थ्रू होगा. अच्छा, एक और चीज़, मतलब आई वाज थिंकिंग कि जिस तरह से टर्किश ड्रामा को यहाँ पर लाया गया और हमने उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया, और लोग जो थे वो मैस्मराइज थे कि टर्की में ये कल्चर है, वहाँ के ये नॉर्म्स हैं, और इस तरह से वहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इस सब के साथ साथ वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए क्या क्या है ये लोगों को पता लगा आफ्टर वॉचिंग द ड्रामा, टर्किश ड्रामा. इस तरह से नहीं हो सकता कि कज़ाकी कोई ड्रामा बनाए एंड वी वुड ट्रांसलेट द ड्रामा इनटू उर्दू, लोगों को दिखाएं कल्चर. इस पे ऑलरेडी वर्क हुआ है. एक फिल्म जो है वो उसकी डबिंग हो रही है और उर्दू में, और शॉर्टली मेरा ख्याल है कि वो अब फिल्म उसमें सिनेमाज में वो उसके लिए हो गया. बाकी जहाँ तक रहा प्लेस, उनके प्लेस की क्वालिटी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है, और हम उस पर भी बड़ा सीरियस वर्किंग कर रहे हैं. आज हमारी मीटिंग भी है इस सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री वालों से, और ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उनके लिए बहुत स्कोप है कि वो उसको रशियन में डब करके और वहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिल्म्स को कर सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारे पोटेंशियल ऐसे हैं कि हम वहाँ के फ़नकारों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं. यहाँ के लोग अगर शूटिंग के लिए जाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमने कहा कि उसके लिए हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं. तो बेशुमार ऐसे ग्रेजुअली हम सब चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए. Now moving to you, I would like to ask you that what are the tourist spots and tourist attraction in Kazakhstan? I would want you to highlight a few things about Kazakhstan so that people and the viewers and our audience will get to know about it. So first of all, I would recommend to visit Almaty, Astana, and Turkestan. Why? Almaty is our former capital, just like Karachi. And to some extent, Almaty reminds me Islamabad. It's a hilly area. There is a ski resort, by the way, the best ski resort in the region. And in Almaty, there are so many things to do. So if your people visit our, as we call it, southern capital, they will enjoy staying in Almaty. What is normally temperature or weather in Kazakhstan? It's tropical, winters, summers. In fact, we have different climate zones. As you like Pakistan? Yes, as you rightly mentioned, Kazakhstan is the 9th largest country in the world. So it means that, for example, next week in Astana, in our capital, it will be minus 27. Oh my God. Yes, we have freezing. When it comes to our central part and northern part, it has freezing winters, but at the same hot summers as well. It's up to plus 30 during the summertime. And what is Kazakhstan famous for? Like I would want to ask you that mention a few things, Kazakh cuisine, so that people will get to know
more about Kazakhstan Yeah, and the yeah. traditions Yeah, and much more. You know, even again, I always say that Kazakhstan and Pakistan have so many things in common. And again, as far as our cuisine is concerned, I must say, for example, plow, Oh. yes, naan, That's wonderful. yeah, samosa, kebab, so many things in common. Kazakhs are meat eaters, and our main dish called Mutton or korma, beef or chicken or Everything. any kind of meat. even horse meat. So yeah, yeah. Wonderful. Horse meat. Yeah, horse meat is very popular. yeah. Horse very milk and horse meat, Yeah, they are yeah, very yeah. popular. You know, we are nomads. We are nomads. This is so- something shocking and amazing. So it's a part of our nomadic civilization. Kazakhs, they belong to nomads. So that's why we have, many And I things was came also from this reading it story. somewhere that your culture is more influenced by Turkish Emoidic No, culture. no. You know, it's not about Turkish. It's about Turkic. Turkic, And yes, and Turkic. Even people in Turkey, they know the reason why I mentioned along with our capital Astana and our southern capital Almaty, I mentioned Turkestan. Turkestan is considered as a cradle of nomadic Turkic civilization. Moreover, many people, even in Turkey, they know that their ancestors, they came to this land, which now called Turkey. They came from this part of our region. So Kazakhstan, could be called as a cradle of Turkic civilization. And for example, last year we established the so-called Organization of Turkic States, and the members are Central Asian states, except Tajikistan and Turkey and Azerbaijan. That's wonderful. And as we are like short of time, we are about to conclude this segment. So I would want you to give a short message to the people of Pakistan. So my message would be, first of all, I would like to welcome our Pakistani sisters and brothers to visit Kazakhstan, and I'm here to develop our cooperation and to bring our two brotherly nations closer to each other. And inshallah, you will be successful Inshallah. because you are doing so many Thank you so much. Thank you. efforts. Thank you so Thank you. much for Thank you for joining having us. me and joining our Thank team you. and joining us in our show. राव खालिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स उस तरह से नहीं है ना, तो ये कब तक आगाज़ होगा? जिस तरह से उन्होंने कहा अप्रैल और मार्च तक. सो इज इट ऑल कंफर्म? जी ऑलमोस्ट सब चीज़ें कंफर्म है एंड होपफुली बाई और वो ट्रेवल टाइम कितना बन ट्रैवल जाएगा? टाइम फ्रॉम लाहौर आई थिंक 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की फ़्लाइट होगी. और मैं समझता हूँ कि बहुत वर्थ है. कंट्री भी चीप है टू विज़िट, जाए हॉलीडेज़ के लिए, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं आप. बहुत खूबसूरत जगह है, अलमाती, शिमकन, आस्ताना. वर्थ है. एज ए टूरिस्ट भी आप लोग विज़िट करते हैं, एज ए बिज़नेस भी कर सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है. ये लोग, इनका रहना सहना बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल से ये लोग रहते हैं. मुस्लिम कंट्री है. मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनकी $70 बिलियन की ट्रेड थी रशिया के साथ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है. तो बेशुमार गैप है, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए. किसी भी दोस्त को, भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम उसके लिए हाजिर हैं. अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने अब सेगमेंट को वाइंड अप करना है. मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि कब से आप लोग जो दोनों ममालिक के दरमियान, एक तो आपका जो एजाज़ी आपको जो अपॉइंटमेंट मिली है ऑनररी काउंसिल जनरल की, और आपका एक ऑफिस भी अमल में आया, सो इसके मुख्तलिफ विंग्स बनने हैं फॉर द कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. सो इनका प्रॉपरली आगाज़ ये कब से होगा? और इस सब के साथ साथ जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जाएं, चाहे बिज़नेस के लिए जाएं, चाहे घूमने फिरने की गर्ज से जाएं, वीज़ा प्रोसेस कितना आसान है या इसको कितना आसान बनाने की ज़रूरत है? वीज़े के लिए जी हम वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए. और एक प्रपोज़ल ये भी हमने इनको दी है कि वीज़ा कलेक्शन सेंटर लाहौर में अगर हो जाए तो लोगों को बहुत फैसिलिटेट हो जाएगा. So we are discussing, we have proposed to the Excellency that we should have a visa collection center like Turkey and so many other All right. countries Yes, yes. they have in Lahore. So at least the people who wants to visit them, so they will have more, less trouble and to go to Islamabad, and so they Yes, will be yes. And facilitated in one Lahore. We are last- trying, we are working on it.
اینڈ لوگ بہت زیادہ کین ہوں گے نا اس بارے میں جاننے پہ کہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا آئے گی اگر ہم ایک ٹرپ لگاتے ہیں قزاقستان کا, سو کم سے کم اس کی کاسٹ کیا آئے گی؟ میں اس کی کاسٹ جو ہے نا جی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ٹریول جو ہے نا اس کا ایئر فیئر وہ اراؤنڈ 100,000 1 لاکھ کے قریب ہوگا, پلس مائنس 10%, انکلوڈنگ دی اکوموڈیشن. no, just the travel. ٹاکنگ اباؤٹ دی تو ٹریول. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایوریج فیملی ود 2 kids جیسے آپ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں تو اچھی ہالیڈیز 15 days کی ان قزاقستان میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 4 to 5 lakhs جو ہے نا پاکستانی روپیز 5 کے قریب ود ان 5 آپ 15 days کے ایک لیے اچھا holiday اچھی trip جو ہے ہالیڈیز جو ہے ود فیملی آپ اس کو کر سکیں اینڈ وچ از ویری اکنامیکل. اٹس ویری اکنامیکل. یس بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہز ایکسلنسی یزحان کستافن, ہز ایکسلنسی راؤ خالد. ویورز آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ والا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. بہت سی چیزیں آپ کو قزاقستان کے بارے میں جاننے کو ملی ہوں گی اور کس طرح سے آپ وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں, کیا کیا بزنس اپرچونیٹیز ہیں, پلس ٹورزم کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز وہاں پر ہیں. اینڈ ابو آل کے مارچ اور اپریل سے ڈائریکٹ فلائٹس کا بھی آغاز ہوگا فرام لاہور ٹو الماتے اینڈ فرام کراچی ٹو الماتے, تو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.